Hello everyone, welcome to our channel. My name is Rashi and in this video we will be starting with question number 2 of exercise 4.1. This was an example we have done in our previous video. Now we are starting with exercise 4.1. We have already done question number 1 of this exercise. So now we are starting with question number 2. Exercise 4.1, question number 2 says, represent the following situations in the form of quadratic equations. Represent the following situations in the form of quadratic equations. So, our first part in question number 2 is, the area of a rectangular plot is okay, so it is important to write down the situation also so that it is more clear to you. I am writing this situation very fast. The area of a rectangular plot is 528 meters square. The length of the plot is in meters is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. Okay, so area of rectangular plot is given, which is 528 meters square, and the length of the plot is 1 more than twice its breadth. Length of the plot is given, but in with respect from breadth. तो अगर हम breadth को x ले लेते हैं, suppose the breadth of this rectangular plot is x, so the length will be 1 more than twice x, मतलब 2x plus 1, right? So ऐसे करके हम equation को form कर सकते हैं. In these questions we have to find the quadratic equation. मतलब हमें solve नहीं करना, हमें length और breadth नहीं calculate करनी, हमें just वो equation form करनी है. Okay, so let's start with, see, suppose the rectangular plot looks like this. So इसमें जो breadth है this, उसको हम x let कर रहे हैं so that जो length है वो हो जाए 2x plus 1. Why? Because read the question again. It says area भी लिख देते हैं. Area is 528 meters square. ठीक है. So the area of rectangular plot is 528 meters square, and the length of the plot is 1 more than twice its breadth. So if the breadth is x, x के twice से 1 more.
मतलब 2 of x से भी 1 ज़्यादा है लेंथ. So this is the length and this is the breadth. ठीक है. So length and breadth. Now so the solution would be, what we will write? Let the breadth be x meters. If the breadth is x meters, the length would be the length would be 2 of x plus में 1 meter, right? And area is given, so we know that area of rectangle क्या होता है? Area of rectangle equal to L into B, right? अब length है 2x plus में 1 and breadth is x. इन दोनों को multiply करेंगे and area which is given 528 meter square, right? So अब multiply करेंगे इसको 2x को पहले x से 2x square, then x को 1 से so plus x and this is 528, right? Now so this we can write as 2 of x square plus x माइनस 528. देखो 528 को ट्रांसपोज करेंगे तो पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू 0. डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि हमने रखा तो इसको LHS में ही है, फिर ये माइनस कैसे हो गया. देखो इन दोनों को हमने पहले लिख दिया एज इट इज, तो ये अभी भी ट्रांसपोज ही हुआ है ना उस साइड पे, तो दैट्स व्हाई ये नेगेटिव आएगा. सो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, दिस इज द रिक्वायर्ड equation. Required equation 2x square plus x minus 528 equals to 0. So I hope this first part is clear. बहुत easy था. Area of rectangle पता होना चाहिए, which is length into breadth. Length and breadth ये हमें in the with respect to x given है, डायरेक्टली नहीं गिवन, वो हमें कैलकुलेट करनी है. मतलब हमें यहाँ से x की वैल्यू अब कैलकुलेट करनी है, देन वी कैन नो द ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लॉट. ओके, सो एरिया वाज गिवन, हमने डायरेक्टली वैल्यूज पुट करी एंड वी केम आउट टू द रिक्वायर्ड इक्वेशन. सो प्लीज नोट डाउन दिस सॉल्यूशन, देन वी विल बी स्टार्टिंग विद सेकंड पार्ट. Now let's come to the second part.
Second part of question number 2 is the product of two consecutive positive integers. The product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. 306. We need to find the integers. First, we should know what do we mean by consecutive. Consecutive means in continuation, or we can say लगातार. जैसे 4, 5, 8, 9, 10, 11 means after 10 we know that 11 ही आएगा. So 10 and 11 are consecutive numbers, right? So consecutive means लगातार, in continuation. If we say 21, 22, so these are also consecutive numbers, but 21 and 23 ये consecutive नहीं है because बीच में 22 skip हो गया. ठीक है? So consecutive positive integers कैसे हो सकते हैं? अगर एक x है तो दूसरा x plus 1, because after x नेक्स्ट नंबर जो होगा वो +1 ही होगा. ठीक है, x कुछ भी हो, अगर x है 100 तो नेक्स्ट नंबर वुड बी 100 + 1, दैट इज 101. सो वी कैन राइट लेट द consecutive positive integers be x and x plus 1. Okay, now consecutive positive integers हो गए x and x plus 1. अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमें गिवन है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x into x plus 1 equals to 306. यही गिवन है प्रोडक्ट. नाउ वी हैव टू फॉर्म एन इक्वेशन. जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे x को पहले x से, देन x को 1 से. So x into x, x square plus x equals to 306, or we can write x square plus x minus 306 equals to 0. So this is our required equation. X square plus x minus 306 equals to 0. So this was our second part. This was very easy part. Just हमें consecutive positive integers पता होने चाहिए कैसे calculate करते हैं. अगर एक x होता है दूसरा x plus 1 ही होगा, because लगातार अगर हम कोई भी दो नंबर लेंगे, one will be x, other will be x plus 1. ठीक है. So according to question दोनों को multiply करेंगे, we'll get our required equation. Please note down this second part. Then we'll be starting with our third part.
let's start with part number 3. Okay, so represent the following situations in the form of equations. And the third part says Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. Okay, so Rohan's mother is 26 years older than him. It means that if Rohan's age is X, his mother's age will be X plus 26 because 26 years older है वो रोहन से बड़ी है, ठीक है, elder है. तो अगर रोहन की एज है X years, so Rohan's mother's age will be X plus 26. Let's do this. First solution. Let Rohan's present age be X years. अगर रोहन की प्रेजेंट एज है X years, so Rohan's mother present age would be X plus 26 years. इतना क्लियर है? Now next line says the product of their ages 3 years from now will be 360. मतलब 3 years from now means अगर अभी मेरी एज है x तो 3 years बाद होगी x plus 3. ऐड हो जाएंगे 3 years और उस एज में. So according to question 3 years from now means रोहन की एज हो जाएगी x plus 3 years and Rohan's mother's age x plus 26 plus 3, right? So basically रोहन की मदर की एज हो गई x plus 29 years. अब दोनों की एज निकाल ली 3 years from now. Now our next step is to find the product. So product given है हमें इन दोनों का x plus 3
इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल्स टू 360. यही गिवन है हमें 360. तो हमें फाइंड करनी है रोहन की प्रेजेंट एज. इट मीन्स हमें फाइंड करनी है द वैल्यू ऑफ एक्स, जो हम इक्वेशन बना के सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं. सो yes, space is left. So see, now there are two binomial expressions, x plus 3 and x plus 29. तो उसके लिए पहले हम x को मल्टीप्लाई करते हैं x से, देन x को 29 से, देन 3 को x से, देन 3 को 29 से. सो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, देन x इंटू 29 x, then 3 into x is 3x, then 3 into 29. अब 29 into 3 क्या होता है? 29 into 3. 9 3 is 27, 2 carry, 3 2 is 6 plus 2 is 8. So 87 equals to 360. Now x square as it is, x और x को दोनों x की टर्म्स को इक्वेट कर देंगे. व्हाट वी विल गेट? x square plus 32x equals to 360 minus 87. 360 में से 87 भी इधर ही माइनस कर देते हैं. व्हाट वी विल गेट? x square plus 32x equals to 360 minus 87. This is 10. This is 5. And let's do this once again. 360 में से माइनस करना है 87. राइट. सो यहाँ से 1 कैरी, यहाँ से 1 लेंगे. दिस विल बी 10. दिस विल बी 5. ओके. 10 minus 7 is 3. 5 में से 8 नहीं जा सकता. यहाँ से 1 लेंगे. दिस विल बी 2. दिस विल बी 15. 15 minus 8 is 7 and this is 2. So 273. Right. So x square plus 32x minus 273 equals to 0. This is the required equation. X square plus 32x minus 273 equals to 0. So children, please note down this. Then we'll recall कि हमने इसमें किया क्या है. We'll recall this because बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है एजेस वाले क्वेश्चन में. राइट. First note down, then we will discuss this again.
Okay, so basically what we did in this question, the question says Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. See children, जब भी Rohan's mother's present age is, Rohan's mother is 26 years older than him. जब भी हमें किसी की एज दे रखी होती है किसी के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में गिवन होती है उसको एक्स लेते हैं. तो यहाँ पे रोहन के रिस्पेक्ट में गिवन है उसकी मॉम की एज, राइट. सो रोहन की एज अगर हम एक्स लेंगे तो उसकी मॉम की ऑटोमेटिकली एक्स प्लस 26 हो जाएगी, राइट. दोनों को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख लिया. देन इट सेज दैट 3 years from now the product of their ages will be 360. 3 years from now means what? If I ask you that what is your age right now? You will say, ma'am, my age is 16 years. But then I'll ask, what will be your age after 3 years? So you will say, ma'am, 16 plus 3. I will be of 19 years after 3 years, right? So जब भी आगे इन फ्यूचर बात होती है तो हम उसमें प्लस कर देते हैं वो इतने ईयर्स. सो रोहन की हो गई x plus 3 and Rohan's mother's age is x plus 26 plus 3. So x plus 29 because 26 plus 3 is 29. देन उन दोनों का प्रोडक्ट हमें गिवन है 360. जस्ट पुट दी वैल्यूज, दोनों को मल्टीप्लाई करो, विल गेट वन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स, सो दैट जब हम इसको सॉल्व करेंगे देन विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स और वो हुई होगी रोहन की प्रेजेंट एज. सो आई डोंट थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ट्रिकी हो सकता है बट इतने एक्सप्लेनेशन के बाद आई थिंक इट इज वेरी इजी. Okay, so I hope you have already written this in your notebooks. Now I am signing up here. I'll be coming up with a new video. In that video, we'll discuss the fourth part of this question also. So stay tuned. Till then, practice each and every question. These types of questions are very important. Okay, thank you.